Assalamu students, as you know that we are studying 7th class English and we have already the lesson is made tea party and we have discussed two topics from the same lesson. ठीक है ना, हमने पहले दो टॉपिक्स कर दिए हैं इसमें क्योंकि थोड़ी बड़ी लेसन थी तो उसको एक साथ हम अपलोड नहीं कर सकते थे, इसलिए हम इसको पार्ट्स में डिवाइड किया. आज हम तक इसको कंप्लीट करेंगे. तो यहाँ तक हमने पढ़ा था कि जो रिडल्स पूछते थे वो डॉर्मोस एंड द अदर एनिमल्स, उनका कोई माना नहीं था, मतलब यूजलेस रिडल्स वो पूछ रहे थे जिनका कोई आंसर नहीं होता था. उनको खुद भी पता नहीं होता था कि इनका आंसर क्या है, क्योंकि वो इरिटेट करते थे किसको, एलाइस को. क्यों? क्योंकि वो गई थी पार्टी में विदाउट बीइंग इनवाइटेड, उसको इनवाइट नहीं किया गया था, दैट इज द रीजन. तो उसके साथ क्या करते थे, उसको सताते थे, इरिटेट करते थे. तो इससे आगे क्या होता है, the Thomas again took a minute or two to think about it and then said it was the honey well. क्योंकि उसने कहा था कि जब अलाइस ने क्वेश्चन पूछा था कि वो क्या चीज खाते थे वेल के अंदर, जब वो रहते थे वहां पे वो क्या चीज खाते थे, उसने कहा कि वो वहां पे हनी खाते थे, शहद खाते थे. तो अलाइस हैरान रहती है कि वो उस वेल में कहाँ पे हनी था जो वो खाते थे. तो इसके आंसर में, इसके जवाब में क्या कहता है डॉर्मोस, 1-2 मिनट लेता है, फिर इसका जवाब देता है कि ये कोई मामूली ये वेल नहीं था, कुआं नहीं था, ये पानी का कुआं नहीं था, इट वाज ए हनी वेल, ये शहद का कुआं था. मतलब जब हम वाटर वेल देखते हैं तो वहां में उसमें क्या होता है, वाटर होता है, पानी होता है, बट इट वाज नॉट ए वाटर वेल, इट वाज ए हनी वेल. ठीक है ना, क्योंकि वो ऐसे जवाब देते हैं कि जो इम्पॉसिबल चीजें होती है वही बताते हैं, क्योंकि हनी वेल कहीं पे होता ही नहीं है. इट वाज ए हनी वेल, ये एक शहद का कुआं था, दैट इज द रीजन दे वर ईटिंग हनी देयर. ठीक है ना. There is no such thing, Elias was beginning to say very angrily, but the hatter and the marcher went to Shasha and Thomas remarked, if you can't be polite, you would better finish the story for yourself. अब अलायंस ने जब ये आंसर सुना कि हनी वेल, वो कहने ही वाली थी कि ऐसी कोई चीज नहीं होती है, मतलब कि हनी वेल नहीं होता है, तो ये कहने वाली थी कि जो मार्चर और हिट, जो दो आदमी थे वहां पे, तो उन्होंने हंसियां भरी या ना कुछ बातें कही, तो इसको कहने नहीं दिया किसको, ना इस अलायंस को. ठीक है ना, इसकी वजह से. और फिर डॉर्मोस ने भी कहा कि अगर आप मुहाजिब तरीके से नहीं रह सकती हो, किससे कहता है, अलाइस से, अगर आप मुहाजिब तरीके से नहीं सुन सकते हो स्टोरी, तो आपके लिए बेहतर रहेगा कि आप खुद ही स्टोरी को कंप्लीट करो, मुझे नहीं कहना है फिर, मैं नहीं कहूँगा फिर. नो प्लीज गो ऑन, अलाइस सेड. अलाइस ने क्या कहा, नहीं, मेहरबानी करके आप ये जो स्टोरी है ये कंप्लीट कर दीजिए. आई वोंट इंटरप्ट यू अगेन, मैं फिर से आपको नहीं रोकूंगी. इंटरप्ट मीन्स रोकना. आई वोंट इंटरप्ट यू अगेन, मैं आपको फिर से नहीं रोकूंगी. द थॉमस एग्रीड टू गो ऑन एंड सो these 3 sisters they were learning to draw, you know. तो डॉर्मोस ने क्या कहा, तस्लीम किया कि हाँ मैं अब ये स्टोरी कंप्लीट करूंगा. और क्या कहता है आगे कि सिस्टर जो थी, सिस्टर्स हु वर लिविंग इन द वेल, व्हाट वर दे डूइंग देयर, दे वर लर्निंग टू ड्रॉ. वो सीखती थी कि कैसे निकाले. दे वर लर्निंग टू ड्रॉ, यू नो. आप जानते हो कि क्या वो क्या सीखते थे वहां पे, कैसे हम निकाले. What did they draw? said Elias, quite forgetting her promise. अभी इसने प्रॉमिस किया था कि मैं आपको इंटरप्ट नहीं करूंगा, रोकूंगी नहीं. ठीक है ना. लेकिन यहाँ पे जब उसने ये एक और कंफ्यूजिंग सवाल सुना कि वो वहां पे सीख रहे थे निकालना. ठीक है ना. तो उसने कहा कि वो क्या सीखते थे, क्या उनको निकालना था जो वहां पे सीखते थे. उसको अपना जो वादा उसने किया था कि आई वोंट इंटरप्ट अगेन, तो वो भूल गई वो प्रॉमिस. हनी सेड डॉर्मोस, डॉर्मोस ने क्या कहा, वो सीखते थे कि हम हनी कैसे निकाले हनी वेल से. Elias did not wish to offend Thomas again, so she began very carefully. लेकिन अब Elias चाहती थी कि मैं इसको फिर से नहीं रोकूंगी, किसको, डॉर्मोस को, क्योंकि वो स्टोरी डॉर्मोस ही कह रहा था, तो इसको मैं फिर से इंटरप्ट नहीं करूंगी. इसलिए वो बड़ी होशियारी से, मतलब उसने अपने आप को कंट्रोल किया कि अब मैं सवाल नहीं पूछूंगा. लेकिन यहाँ पे फिर वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाई जब उसने सुना कि वो सीख रहे थे कि कैसे हम हनी निकाले, हनी वेल से, यही सीख रहे थे. But I don't know, I don't understand why did they draw the honey from. लेकिन अब फिर से सवाल पूछती है, क्योंकि वो quite forget है, she quite forgot his promise है कि her promise कि मैं रुकावट नहीं बनूंगी आपके स्टोरी में. तो उसने क्या कहा, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि वो कहाँ से ये जो हनी था, ड्रा द हनी फ्रॉम, उनको कहाँ से हनी निकालना था. Why did they draw the honey from, ये हनी वो कहाँ से निकालते थे, शहद वो कहाँ से निकालते थे.
You can draw water out of water well, said the Dartmouth. Dartmouth ने कहा कि जैसे आप इस वाटर वेल से पानी के कुएं से पानी निकालते हो, सिमिलरली यू कैन ड्रा हनी फ्रॉम द हनी वेल, ठीक है ना. इसी तरह से आप अगर हनी का ये कुआं होगा, शहद का कुआं होगा, तो वहां से आप डेफिनेटली शहद निकाल सकते हो. सो आई थिंक यू कुड ड्रा हनी आउट ऑफ योर हनी वेल, couldn't you? क्या नहीं कर सकती हो? हाँ, you can. If there is a honey well, you can draw the honey from the honey well, couldn't you? क्या आप नहीं कर सकती हो? But they were in the well, Elias said to the Dartmouth. Elias ने क्या कहा, लेकिन वो तो कुएं के अंदर थे. पहले आपने कहा कि they were residing in the well, वो रह रहे थे कहाँ पे? कुएं के अंदर. तो फिर वो कैसे निकालते? जब वो खुद ही कुएं के अंदर थे तो वो कैसे निकालते थे ये हनी, ठीक है ना. इसने इसको कंफ्यूज कर दिया था. Of course they were, said the Dartmouth, in the well. Dartmouth ने फिर से कहा, हाँ बिल्कुल, of course, बेशक, इसमें कोई शक ही नहीं है. They were in the well. वो कहाँ पे थे? वो वेल में थे, वो कुएं में थे. This answer so confused poor Elias that she let the Dartmouth go on for some time without interrupting it. इस जो ये आंसर था, इसने क्या किया, इसने इतना कंफ्यूज किया कि इसको अलाइस को कि वो कुछ देर के लिए खामोश रही, क्योंकि वो सोच रही थी किस तरह से ये हनी वेल के अंदर रह के हनी निकाल सकते थे. ये बेचारी वो इस क्वेश्चन पे सोच रही थी, इसलिए वो कुछ मदद के लिए क्या रही, खामोश रही, इसलिए उसने इंटरप्ट नहीं किया. They were learning to draw. The Dartmouth went on yawing and rubbing its eyes. हाँ, वो यही सीख रहे थे कि कैसे हम निकाले. लेकिन उस वक्त क्या था, his eyes were getting sleepy. किसकी eyes? जो ये डार्मोस था, उसको नींद आ रही थी, तो वो क्या कर रहा था, यान कर रहा था और रब कर रहा था अपनी आईज को, ठीक है ना. फॉर इट वॉज गेटिंग वेरी स्लीपी, क्योंकि उसको नींद आ रही थी जबरदस्त है. एंड दे थ्रो ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स, और वो सभी चीजें निकालते थे. कौन सी चीजें? एवरीथिंग दैट बिगिन्स विद एम, वो चीजें जो एम से शुरू होते थे. व्हाई विद एम, सेड एलाइस ने कहा, क्यों वही चीजें जो एम से स्टार्ट हो रहे थे. व्हाई नॉट, सेड द मार्चिया ने कहा, क्यों नहीं. Elias was silent. यहाँ पे Elias खामोश हो गई. The Dartmouth had closed its eyes and was going off to sleep, but the head pinchered him and it woke up again with a little cry and went on. अब बिल्कुल सोने के करीब पहुंच गया था कौन, जो ये डार्मोस था. तो इसी दौरान क्या होता है, दोनों मॉर्चर और हिटर के, तो उसने वो फिर से पिंच करते हैं, वो बेचारा फिर से नींद से बेजार हो जाता है. लेकिन इस वक्त उसको चीख निकलती है, लिटिल बिट ऑफ क्राई एंड वेंट ऑन, और फिर से स्टार्ट करता है वो स्टोरी. दैट बिगिन्स विद एम, आपको पता है वही चीजें वो निकालते थे वहां से जो स्टार्ट किससे होते थे, एम से. सच एज माउस ट्रैप्स एंड द मून एंड द मेमोरी एंड माइटनेस. यू नो यू से थिंग्स ऑफ मच ऑफ माइटनेस, बहुत ज्यादा मतलब कोई चीज निकालना. डिड यू एवर सी सच ए थिंग एज अ ड्राइंग ऑफ माइटनेस, क्या आपने कभी एक चीज देखा है, मच ऑफ माइटनेस. माइटनेस मीन्स कसरत में, मतलब वो चीजें ये बताते हैं जिनका कोई माना ही नहीं है, ऐसी चीजों का नाम ले रहा था कौन, डार्मोस. क्योंकि वो जो स्टोरी था वो बेसलेस स्टोरी थी, उसका कोई माना ही नहीं था. इस तरह की स्टोरी वो कह रहा था, जो उसको आगे आता था समझ वही वो कह रहा था, ठीक है ना. Really not, you ask me, said Elias. Elias ने कहा, मुझे नहीं पता है कि कसरत कीजिए वो कैसे निकालते थे वहां से, कहाँ से, वेल से. मैंने कभी नहीं देखा ये चीजें, आप बताइए. वेरी मच कंफ्यूज, यहाँ पे वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गई थी, ठीक है ना. आई डोंट थिंक आई हैव, मुझे लगता है कि मैंने ऐसी चीजें कभी नहीं देखी है, ठीक है ना. देन यू शुडंट टॉक, सेड द हेडर. हेडर ने कहा, अगर आपको पता ही नहीं है, यू शुड नॉट टॉक, फिर आपको बात नहीं करनी चाहिए. अगर आपको किसी चीज का इल्म ना है, हालांकि ये जो सवाल थे या ये जो स्टोरी कह रहा था डार्मोस, वो बिल्कुल बेबुनियाद स्टोरी थी, इसका कोई मकसद ही नहीं था, ठीक है ना. ये बिल्कुल इरिटेट कर रहे थे किसको, अलायस को. क्यों? क्योंकि वो बैठी थी उनके दरमियान विदाउट बीइंग इनवाइटेड. शी वाज नॉट इनवाइटेड बाय द मार्चर डार्मोस एंड द अदर एनिमल हु आर हैविंग ए पार्टी देयर, ठीक है ना. तो वो बिन बुलाई वहां पे बैठ गई. इसी की वजह से जो बाकी एनिमल्स थे वो क्या हो गए, वो इरिटेट हो गए किससे, अलायस से. तो वो आप इसको क्या करते, चिल्लाते थे, वो ऐसी कहानियां बनाते थे जिनका कोई मकसद ही नहीं था, ऐसी रिडल्स पूछते थे जिनका कोई आंसर ही नहीं था, ठीक है ना. क्यों? ताकि जो अलायस है वो क्या हो जाए, हम पे वो तंग आ जाए, बोर हो जाए और यहाँ से चली जाए. That is the reason they were asking these riddles or these useless stories, ठीक है ना. तो इस स्टोरी की वजह से वो क्या हो गई, बहुत ही कंफ्यूज हो गई, ठीक है ना. उसने सोचा नहीं, मैंने ऐसी चीजें नहीं देखी है. Then you shouldn't talk, said the head. हेड ने क्या कहा, तो आपको बात नहीं करनी चाहिए जिसका आपको इल्म ना हो, हालांकि ये चीजें थी ही नहीं, ठीक है. This piece of rudeness was more than Elias could bear. लेकिन ये जो बेइज्जती थी, बेइज्जती बहुत बार हुई इसकी, किसकी, अलायस की बहुत ज्यादा बेइज्जती उन्होंने की, ठीक है ना.
بہت سارا ڈانٹ ڈپٹ دیا کس کو الائس کو. لیکن یہ جو بےعزتی تھی کہ آپ کو بات نہیں کرنی چاہیے, ٹھیک ہے نا, یہ جو بےعزتی ہوئی کس کی بےعزتی ہو گئی, الائس کی, ٹھیک ہے نا, دس روڈنس, ٹھیک ہے نا, اس سے کیا ہو گیا, یہ اس کو برداشت ہی نہیں ہوا, کس کو, الائس کو, ٹھیک ہے نا, الائس کو یہ برداشت ہی نہیں ہوا, اتنی بےعزتی اب اس کی ہو گئی, یہ اس کو برداشت نہیں ہوا. شی caught up in great disgust and walked off. وہ بالکل غصے میں کیا ہو گئی, کھڑا ہو گئی اور وہاں سے چلی گئی, وہاں سے چلنے لگی, ٹھیک ہے نا, وہاں سے واپس چلنے لگی. اب سوچا کہ اب یہاں رہنا ٹھیک نہیں ہے کیونکہ انہوں نے میری بہت زیادہ بےعزتی کی, اب میں یہاں سے چلی جاؤں گی, میں یہاں پہ نہیں رکوں گی, اور وہ کھڑی ہو گئی اور وہاں سے چلنے لگی. The Dormouse fell asleep instantly. اور جو ہی وہ وہاں سے نکل گئی, ٹھیک ہے نا, جو ڈارموس تھا پھر اس کو وہیں پہ کیا پڑ گئی, نیند پڑ گئی, ٹھیک ہے نا, کیونکہ he was already sleepy, ٹھیک ہے نا, تو اس کو پھر سے نیند پڑ گئی. And neither of the other two any notice of her going. اور جو باقی مارچر اور ہیٹر تھے انہوں نے بھی اس کی طرف دھیان نہیں دیا. الائس چلی گئی تو چلی گئی, کوئی ٹینشن نہیں ہے, اس کی طرف کوئی دھیان نہیں دیا. حالانکہ اگر ہم پارٹی کہیں پہ کرتے ہوں گے, اچانک سے ہم میں سے کوئی وہاں سے چلنے لگے گا, تو ہم ڈیفینیٹلی اس کو پوچھیں گے آپ کیوں جا رہے ہو, ابھی ہم نے بات نہیں کیا, آپ کیوں جا رہے ہو, آپ کہاں جا رہے ہو, ٹھیک ہے نا. لیکن انہوں نے نوٹس ہی نہیں کیا. ڈارموس کیسے نوٹس کر پاتا, کیونکہ وہ فاسٹ اسلیپ تھا, ٹھیک ہے نا. جو باقی دو تھے تو انہوں نے بھی نوٹس نہیں, انہوں نے بھی اس کی طرف دھیان ہی نہیں دیا, ٹھیک ہے نا, چلی گئی تو چلی گئی, ٹھیک ہے نا. She looked back once or twice. لیکن الائس جو تھی اس کے دل میں یہ تھا کہ شاید یہ مجھے پھر سے بلائیں گے, یہ جو انیملز ہیں یہ مجھے پھر سے بلائیں گے, ٹھیک ہے نا. اس لیے اس امیج میں وہ جب جا رہی تھی تو پیچھے مڑ کے اس نے ایک دو بار دیکھا کہ شاید یہ مجھے پھر سے بلائے, ٹھیک ہے نا. کون, الائس, ٹھیک ہے نا. once or twice, she looked back. اس نے پیچھے مڑ کے ایک دو بار دیکھا تاکہ یہ مجھے پھر سے بلائے, half hoping that they would call after her, but they didn't. یہ امید, یہ آس لگائی بیٹھی تھی کہ شاید یہ جو انیملز ہیں یہ مجھے پھر سے بلائیں, ٹھیک ہے نا. لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا, they didn't. انہوں نے ایسا نہیں کیا. The last time she saw them. اور آخری بار جب اس نے پیچھے مڑ کے نظر دیکھا تو اس نے کیا دیکھا, they were trying to put the Dormouse into the teapot. کیا دیکھا اس نے, وہ دونوں مارچر جو ہیٹر جو تھے وہ کوشش کر رہے تھے کہ ہم ڈارموس کو کہاں پہ ڈالیں گے, جو چائے کا فتلا ان کا تھا, ٹھیک ہے, جس میں چائے تھی اسی میں اس کو ڈالیں گے, ٹھیک ہے نا. they were trying to put the Dormouse into the teapot. teapot میں چائے کی پتیلی, ٹھیک ہے, جس میں چائے کا بناتے ہیں, تو وہ کوشش کر رہے تھے کہ ہم اس کو اٹھا کے کس میں ڈالیں گے, اس چائے کے پتیلے میں, ٹھیک ہے نا. تو یہ کیا آپ کی جو یہ پروز کی لیسن تھی, فار یور انٹرٹینمنٹ, ٹھیک ہے نا. ہوپ دیٹ کہ آپ کو سمجھ پہ آیا ہو, آپ نے خوب مزہ بھی لیا ہوگا اس کو پڑھ کے, ٹھیک ہے نا. ایکچولی لیا گیا ہے الائس ان ونڈرلینڈ ایک اسٹوری ہے, ٹھیک ہے نا, اسی کا ایک چھوٹا سا پارٹ لیا گیا ہے جو آپ کی اس کتاب میں رکھا گیا ہے فار یور انٹرٹینمنٹ, ٹھیک ہے نا. تو کیا ہے یہاں پہ اینیمل ڈفرینٹلی بہیو لائک ہیومنز, لیکن اس کے ساتھ اس نے جو برتاؤ کیا, اٹ واز ٹو ریوڈ. کیوں, بیکاز وہ بیٹھ گئی تھی ان کے ساتھ دعوت کے بغیر, ٹھیک ہے نا. تو انہوں نے اس کے اس طرح سے ویوہار کیا. تو اس وقت دیجیے اجازت, خدا حافظ.